So, good morning, everyone. Thanks for attending the session this weekend. Myself, Akshay Thakre from Abhay Maniyar and Associates, is here with you today. I take this opportunity to explain you about our firm, to introduce, give a formal introduction to our firm. काफी लोग तो काफी सालों से हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ लोग नए भी जुड़े हैं, बट स्टिल एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन तो मैं देना चाहूँगा. We are into audits, outsourcing, accounting and taxation. I personally look after the accounts and tax division, while Mr. Vivek from our team looks after the CFO services. We are fortunate to have Abhay sir with us today as a guiding light. So, thanks for joining the session. बहुत अच्छा लगा आप सब लोग आए. थोड़ा सा हमारी फर्म के बारे में भी शॉर्ट में बताता हूँ तो कि आपको भी पता चले. बहुत कुछ तो आप लोगों को पता है, आप काफी सालों से जुड़े हैं हमारे साथ, बट एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन आज मैं एक अपॉर्चुनिटी लूंगा. सो वी आर अ फर्म ऑपरेटिंग थ्रू वाशी सिंस लास्ट 22 years. We are chartered accountants, company secretaries, management consultants, which help to provide comprehensive solution to our clients. At the helm, we have Abhay sir, who is an ex-Deloitte, who looks after the assurance engagements, audits, and business consulting. He is working with both small and large organizations since many years, and due to his experience and expertise in this domain, he provides valuable suggestions to the clients. Also provides the solutions to the challenges which these businesses are facing. Our firm is specialized into accounts and tax advisory, with a strong focus on direct tax litigations, assessments, surveys, tribunals with the department. We are also empaneled with the registrar of cooperative societies, and also we look after the trust matters with the charitable commissioners and with the income tax department. We have a long relationships with large corporations like ITC, HUL, L'Oreal, Johnson & Johnson, and many such companies. In these companies, we majorly do stock verification, fixed assets verification, staffing, and data processing. We also have a management consultant, Mr. K. Sriram, with us, and many other such senior consultants who give business mentoring and wellness sessions to the corporates and to the business owners. We work closely for fundraising activities like loan structuring, debt advisory, and SME IPOs as well. For the past 7 years, we've been the concurrent auditors of Suryodaya Bank Pan India. As the leader of compliance vertical, I myself is responsible for smooth operation of our clients' compliance needs. मैं ही हमेशा आपको कॉल करता हूँ, मैं ही बोलता हूँ सर TDS भरो, ये करो, ये सब मेरी ही जिम्मेदारी है. That is why I call you. I'm excited to share that we also do data automation at our client locations under the brand name Easy Audit. We have a separate technology team for that. This helps us in providing smooth services to our clients. Now we have Mr. Vivek with us, who will give a brief introduction about the CFO services which he looks after. Over to Mr. Vivek. Thank you, Akshay, for such a warm introduction. So, good morning, everyone. आवाज आ रही है सबको मेरी? Yes, आ रही है. So, myself, CA Vivek Prasad. Over the years, we have observed that as business grows, we often see a natural complexity due to layers of processes and hierarchies. This can lead to critical areas like controlling operating cost, managing working capital, and ensuring cash flows efficiency being compromised. Growth-focused businesses often miss on crucial benchmarking challenges and improvement. That's where our CFO services comes in. We understand the challenges businesses faces. We empower your management team to develop strong and reliable business plans. We bring clarity and structure to complex financial situations, ensuring you to make informed decisions. I lead CFO services vertical under AMA. Over to you, Abhay sir.
Thank you, Vivek. I'm sending you all the profile of the firm. Going forward to the session, the communication in our work is paramount importance for us. To provide you the professional services, it's very important to have effective communication, which fosters trust and ensures that we provide you a good quality of service. With this understanding, let's proceed to our today's topic, year-end tasks by Abhay sir. Thank you, sir. Oh, over to you. Yes, hi. Hi, hello everyone. Thank you, Akshay, and welcome everyone again. Thank you all of you for attending this session. Just a moment, I'm just setting up certain technicalities. Yes, Mohit will be sharing it separately. The profile will be shared to you. Maybe due to some technicalities, we are not be able to attach it on the chat box. But on personal WhatsApp, we'll ensure that the profile of the firm is shared to everyone. Akshay, I would just like to share everyone with this coming note. We all have been discussing and hearing March end aa gaya hai. How we look up to the March end. From the audience and the attendees, I would request, what do you think March end है मतलब क्या काम करते हैं? केतन हम लोग क्या करते हैं when it comes as a March end? और ज्ञान सिंह जी जैसे हम लोग बोलते हैं मार्च एंड आया है, सो व्हाट ऑल थिंग्स दैट वी थिंक अपॉन, व्हाट ऑल थिंग्स गो इन आवर माइंड, या फिर हम लोग क्या क्या प्लान करते हैं? कैन प्लीज एनीबॉडी शेयर इन द चैट बॉक्स और दे कैन स्पीक आल्सो. सो मैं ऐड करना चाहूंगा. या प्लीज मोहित. सो ईयर एंड ऐसा हो जाता है कि हम लोग पूरे साल घर ऐसा बिखरा के रखते हैं और ये एंड पे लगता है कि घर साफ करना है क्योंकि कोई और आने वाला है, और अपने को पूरे साल होता है कोई आने वाला तो पूरा घर प्रॉपर मेंटेन करना है, हर चीज ऑन प्लेस रखनी है, चीजें जिस वे पे एज कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है उसको मैच करके वी हैव टू कीप रेडी फॉर एवरीथिंग. यस, राइटली सेड. सो वंस इज एज वी सेड, हमें हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह थोड़े क्लीन मेंटेन करें. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. Anything anyone else wants to add? Okay, I'll just continue with this, saying when we say March end aa gaya, it creates a lot of emotions within us. A very commonly one kind of an emotion would be a March end aa gaya hai, so a person gets feeling very painful, or a person is really indifferent about it. Or it can be possibly a very matured accountant and the promoter will make it as a festive. March end can be seen as a festive season, or it can be seen as a very painful process where we want to undergo. Through this session, we are just at AMA. We are going to try and ensure that this entire process or this March end feeling of emotions converts from a painful activity or an indifferent activity towards actually a festive activity for our accountants. When we say accountants, I request the accountants being the guiding star to our promoters. So we have today even the accountants as well as the promoters attending this session. But most of the time we will be addressing to the accountants who are ready, who are attending this, and looking forward for promoters to step into the shoes of the accountant and be part of this session, because paramount, the important responsibility is ultimately with the promoter and the management themselves of the accounts. तो हम जब बोलते हैं कि मार्च एंड आ गया है और हमें ये क्लीन बुक्स वगैरह क्यों रखना है? See, earlier with the days when we used to maintain books of accounts and the system of revenue department, या जो भी हमारे statutory GST बोल ले लो आप, या MCA ले लो, बहुत सारी चीजें मैनुअल हुआ करती थी. There were things where we used to really even work beyond March for the previous year. With the changing scenario all across in the system with your policy makers, things have shifted from manual to almost everything on the technology base. हमारे GST returns watertight, time bound strictly है. We look forward कि भाई हमारे जो returns जो technology submissions होते हैं वो भी हम amend नहीं कर पा रहे. So it becomes all the more necessary to ensure that these margin activities are very strictly looked up to, very diligently looked up to, and with lot of interest. हम ये margin activity इसके लिए देखते हैं so that we don't have to in future
get into any trap which makes us inconvenient. When we see for this, Akshay, can you just start the next slide? We have devised with commonly any of the businesses, be it a service industry, be it a proprietor, be it a corporate, be it a large corporate into the business of manufacturing or trading, or be an HNI or any other investor or an individual salaried, not maybe salaried but mainly to the business owners that today we are going to focus. ये 5 एक्टिविटी हमें कॉन्स्टेंटली फोकस करनी चाहिए. These are the pillars for any kind of मार्च एंडिंग क्लीनलीनेस. जैसे मोहित जी ने बोला हमें क्लीनलीनेस देखना है, हमारा घर सजा के रखना है, और somebody is going to come and audit or somebody has to go and submit your documents. So we go upon, today we will be speaking broadly about stock and cash verification, balance confirmation, GST compliance, tax planning. I think so this 4th point is going to be reconciliation and accounts hygiene and tax planning. We'll go with the first point of stock and cash verification. Akshay can just change this. This is mainly with the businesses जहाँ पे हमारे stocks, inventory हमारे books में रहती है. So this is first point that we would like to check upon is stock verification. Can anybody please share, or ज्ञान सिंह जी क्या हम बता सकते हैं कि physical verification of inventory इसका मतलब क्या? What we really feel, what do you mean by physical verification of inventory? ये क्या एक्टिविटी है? सर फिजिकल में क्या होता है कि अभी जैसे हमारे सॉफ्टवेयर में जो है, एक तो सॉफ्टवेयर में है, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन में मतलब वो जगह पे वो आइटम प्रोडक्ट है कि नहीं. हमारे स्टॉक मतलब सॉफ्टवेयर में दिख रहा है 25 क्वांटिटी, लेकिन फिजिकल में 25 ही है जगह पे या कुछ और दिख रहा है. तो वहां पे एक सारी चीज पता चलती कि फिजिकल में क्या है. तो हमें जाके चेक करना है कि एक्चुअल में हमारे पास अवेलेबल कितनी क्वांटिटी है. राइट सर. बट मैं बता रहा हूँ हम इसको ना थोड़ा ज्यादा बेसिक लेवल पे समझेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन क्या है. और मेरा लाइव एग्जांपल मैं बताऊंगा. डोंट प्लीज कंसीडर दिस एज अ कुक्ड अप. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विद लॉट ऑफ एमएनसीज of all size, small, large, huge, and to the surprise, one of an MNC I went personally to be as an observer, and the assignment was given to us for this control and streamlining of the verification. I was speaking with the logistics head. उनको पूछा कि आप फिजिकल वेरिफिकेशन करते हो? They said yes sir, फिजिकल वेरिफिकेशन एक्टिविटी हम करते हैं रेगुलर, हमारे डॉक्यूमेंटेशन है. तो उन्हें मुझे सारे रिकॉर्ड्स दिखाए कि वहाँ पे जैसे आप बता रहे हो ना कि 10 की जगह 5 है, 2 है, यही हमारी क्वांटिटीज है. And but to the surprise and to the amuse, a very basic question was asked. आपने क्वांटिटी तो गिन ली, क्या आपने ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट जो रिकॉर्ड्स है अपने जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है, क्या उसमें इसका डिफरेंस का इम्पैक्ट दिया है? एंड द आंसर रिप्लाइड टू मी फ्रॉम एन एमएनसी कॉर्पोरेट वाज, नहीं सर, हमने बोला वेरिफिकेशन करो, हमने वेरिफिकेशन कर लिया, बट उसका जो करेक्शन है, उसका करेक्शन का इम्पैक्ट हमने अकाउंट्स में दिया ही नहीं. नाउ इट वाज सो अम्यूजिंग फॉर मी कि कंपनी विद ऑलमोस्ट 300 करोड़ टर्नओवर है उसका, who's into manufacturing of safe, German based company. उसके लॉजिस्टिक्स हेड बात करते हैं कि सर हमने ये तो कर लिया है वेरिफिकेशन, हमने उसका इम्पैक्ट नहीं दिया. सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी ऑल शुड अंडरस्टैंड इज, हम जब भी वेरिफिकेशन करें उस वेरिफिकेशन का कोई डिफरेंस जो है उसका इफेक्ट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देना जरूरी है. हमारे वेरिफिकेशन करने से चीजें खत्म नहीं होती, उसका इफेक्ट तो देना चाहिए. हम मतलब बीमारी तो पता चलती है, दवाई कौन करेगा? You give the effect into the books of accounts, which is very critical. ये बेसिक चीजें हैं, हम शायद छोड़ देते हैं. Now extending to this, हम जब बोलते हैं physical verification करना, please ensure one more point has to be understood. Physical verification is maintaining your inventories in your records. Stock हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा है current assets का. हमारा asset side में जो balance sheet की जो asset side है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा stock मायने रखता है. अगर उसकी वैल्यू या उसकी क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाती है या डिफरेंस आता है, तो हमें सेल्स करने में दिक्कत आती है, क्योंकि हमारा स्टॉक आउट नहीं हो पाता है, या फिर हम सेल्स इनवॉइस ले लेते हैं और फिजिकली स्टॉक मिलता नहीं, तभी भी हम सेल्स नहीं कर पाते. हमें अगर अनफॉर्चुनेटली कभी जीएसटी की विजिट हो जाए एंड अगर हमारे स्टॉक रिकॉर्ड्स के हिसाब से ना हो, देयर आर ह्यूज पेनल्टीज वी आर गोइंग टू फेस. प्लीज बी केयरफुल. तो स्टॉक मेंटेन रखना ये हमें एनुअल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, बट ये बहुत पीरियोडिक एक्टिविटी होनी चाहिए, विच कुड बी अ मंथली एक्टिविटी.
और अ डेली एक्टिविटी। इस चीज को हम बोलेंगे साइकिल काउंट। हमने हमारे सिस्टम में, हमने हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में और स्टोर्स डिपार्टमेंट में ये सिस्टम डलवानी चाहिए विच इज कॉल्ड अ साइकिल काउंट। मैं because of limitation of time I will not stretch too much upon what is a cycle count, how it is to be done. I would request whoever is interested to know more detail about how a physical verification has to be done, what precautionary steps before the verification has to be done, और क्या प्लानिंग करनी चाहिए टू गेट बैक ऑन एन वन ऑन वन बेसिस, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा मेरी टीम साइकिल काउंट क्यों जरूरी है और किस तरीके से कंडक्ट करना चाहिए। wherever you people are aware of, I would request cycle count ये एक्टिविटी हम एवरी रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट करें। प्लीज ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन योर सिस्टम। सिमिलरली व्हेन वी से टू कैश बैलेंस, ये भी हमें मार्च एंड पे इंश्योर करना ही है। देखो हमें पूरे साल तो मेंटेन करना ही है मैचिंग, बट मार्च एंड देयर इज नो ऑप्शन, नो अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एस्केप कि सेइंग नहीं हमारे को चलता है, तो चलता है एटीट्यूड हैव गॉन नाउ। कैश आई थिंक सो ओल्डन डेज जो पहले से बिजनेसमैन है, हमारे दादाजी, हमारे अंकल, एवरीबडी दे यूज्ड टू ऑलवेज से, माय फादर दे यूज्ड टू से, आपण जे शिल्लक जेव्हा आपण केतन तुला आठवत असेल, आपण जेव्हा म्हणायचो आपले वडील वगैरे, काय रे शिल्लक मिळवली का, शिल्लक मिळवल्याशिवाय यायचं नाही घरी, हा आठवतंय तुला? आपल्या दुकानदारीत आपण जेव्हा गल्ला उघडायचो तर आपल्याला क्लिअर सांगितलं गेलं होतं, शिल्लक मॅच होत नाहीये, घरी यायचं नाही, तोपर्यंत रात्री झोपायचं नाही. सो दॅट एटीट्यूड समवेयर वी हैव मिस्ड अपॉन. नाउ विद द सिनेरियो ऑफ टैली, वी फील आज नहीं चलो हम कल भी ठीक कर लेंगे. Olden days since we had manual books, we were not allowed to go home also till that day's cash is matched. So technology का use हमें और advancement पे जाना चाहिए, ना बल्कि laziness में. Please ensure your cash is everyday matched. Your stock is never supposed to be negative. Your cash never supposed to be negative. जितना actual cash है उतना books of accounts में लेके आइए. Next slide, Akshay. Now let's check with the second point that we need to be very careful for. Balance confirmations. हम जब अकाउंट्स क्लीन चाहते हैं ना, बैलेंस शीट में ये आपके ऑपरेशनल सबसे बहुत इंपॉर्टेंट लेजर्स हैं, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स कंफर्मेशंस. दिस इज वेरी कॉमन. आई एम ट्राइंग टू टच अपॉन वेरी बेसिक थिंग्स, बट आई एम वेरी श्योर हम ये बेसिक्स को छोड़ देते हैं एंड वी ट्राई टू जंप डायरेक्टली ऑन द नेट प्रॉफिट. हम डायरेक्टली सीए के पास आते हैं, बात करते हैं, सर प्रॉफिट बहुत ज्यादा आ रहा है सर, कुछ तो कर दो. पता चलता है क्रेडिटर्स में परचेस बुक ही नहीं हुआ है, क्रेडिटर्स में डेबिट बैलेंस चल रहा है. बाद में पता चलता है एडजस्टमेंट्स भी कर देते हो आप आपके हिसाब से, बता रहे सर परचेस बुक करो, क्रेडिटर्स में डेबिट बैलेंस आ. सो एनीथिंग बिफोर डूइंग एनी फाइनलाइजेशन, प्लीज एंश्योर कि हमारा पहले घर सारा ठीक हो. घर सारा ठीक होने के लिए स्टॉक वेरीफाई एग्जैक्टली कर दो, ताकि तुम्हारा वैल्यूएशन आए. पहले तो करेक्शन पे आ जाओ, पहले आप एक्यूरेसी पे आइए. Unless you don't come to your records accuracy, anything you build upon with a weak foundation is going to collapse. हमारा कुछ भी प्लानिंग करोगे आप, सारा कोलैप्स हो जाएगा. And then you come back and you are expecting the professional to do the building of a very strong building with a weak foundation. कैसे होगा? So the another pillar to have a strong foundation is balance confirmation from debtors and creditors. ये हम शायद 11th स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं, 11वीं से, क्या बैलेंस कंफर्मेशन लेना है, बैलेंस कंफर्मेशन लेना है. कैन एनीबडी प्लीज गाइड, ट्राई टू स्पीक और वांट टू गिव एन इनपुट दैट व्हेन डू यू मीन बाय बैलेंस कंफर्मेशन फ्रॉम डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, व्हाट डू यू रियली मीन? कि डेटर्स क्रेडिटर्स का बैलेंस कंफर्मेशन का मीनिंग क्या है, उसका प्रोसेस क्या फॉलो करते हैं? इफ एनीबडी वांट्स टू प्लीज शेयर, आई विल गिव सम 15 सेकंड्स. Yeah, Mohit, if you want to share the process of balance confirmation. I can. So, balance confirmation is nothing but मेरे बुक्स में क्या दिख रहा है, सामने वाले के बुक्स में क्या होना चाहिए, मैच कर रहा है कि नहीं. एंड इट इज स्टैट्यूटरी, आप बोल सकते हैं एज ए ऑडिटर, इट्स मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कि भाई चेक कर लो मेरे बुक्स और उसके बुक्स में मैचिंग है कि नहीं है. इफ नॉट, इट्स ओके, बट वी रिक्वायर द रिकंसिलिएशन एंड द सब्सिक्वेंट इम्पैक्ट एज वेल. क्योंकि बहुत जगह ये केसेस दिखा है कि हम लोग बिल बुक कर लेते हैं पर सामने वाले ने बुक नहीं किया हुआ है, या सामने रिकॉर्ड किया वो 8 महीने बाद, 1 साल बाद किया हुआ है, और हम लोग ने तो अपने बुक्स में देखा और बोला कि चलो आगे बढ़ लेते हैं. बट क्रॉस चेक करना मैंडेटरी हो जाता है एज ए स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिट इज वेरी एसेंशियल एंड मैंडेटरी रिक्वायरमेंट.
करेक्ट मोहित जी. बियॉन्ड स्टैट्यूटरी मैं थोड़ा ना वेरी लाइव एग्जांपल्स या फिर मैं कुछ रेफरेंसेस से अगर मैं बात करूं, Yes. यू नो व्हिच कैन मेक इट लिटिल लाइवली, कि ना हम बैलेंस कंफर्मेशन नहीं करते हैं ना, तो ये मुझे ना कभी कभार है ना ऐसा लगता है कि ना ये हमारा कॉलेज डेज का वो एक तरफा प्यार है. तो यार मैं अपने तरीके से तो यार मैं तेरे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, लेकिन सामने वाले को तो पता चले कि वो भी मेरे साथ एग्री करेगा चांद सितारे तोड़ लाने के लिए. So you know, till we don't agree, two parties, we don't marry, right? It is something I always try to see कि जो एक तरफा प्यार जो है ना, एक तरफा प्यार don't lead to anywhere but destruction. तो आप जब तक ना सामने वाले को अपनी भावनाएं completely पहुंचा नहीं सकते और सामने वाले की भावनाएं अपने साथ जब तक मैच नहीं होती है ना, it doesn't lead to a fruitful conclusion. And when you convert, you know, want to divert back to the statutory aspect, it brings a big challenge when there is a problem or is kind of any kind of scrutiny in either of the parties, be it GST, be it income tax. And उस समय अगर कभी बैलेंस कंफर्मेशन किसी डिपार्टमेंट ने आपसे मांग ली for the opening of accounts of somebody else's returns for no default of yours, only default is you have been little lazy, little negligent of ensuring on a periodic basis of confirmation. एंड आपने अगर कोई इनकरेक्ट या नॉट मैचिंग स्टेटमेंट भेज दिया उनको, देन बॉस बी रेडी फॉर द साउंड इन द म्यूजिक. आई वुड रिक्वेस्ट दैट बैलेंस कंफर्मेशन कम्स इन वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आप बैलेंस कंफर्म से जब आप लेते हो, अकाउंटेंट्स आई वुड रियली लाइक टू टेल देम, बैलेंस कंफर्मेशन आप लेते हो, डोंट रीच टू अ कंक्लूजन दैट बैलेंस कंफर्मेशन मतलब मैचिंग है. मैंने कई अकाउंटेंट्स को ये ऑब्जर्व करते देखा है इन माय दिस लॉन्ग 20 to 25 years ऑफ प्रैक्टिस. बी इट एनीथिंग, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ प्रोप्राइटर का इंडस्ट्री हो एज दिस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट ऑल लेवल्स. आई एम टेलिंग यू सर, एट ऑल लेवल्स. दिस वेरिफिकेशन ऑफ, जैसे मैंने कैश बैंक बताया, वी हैव इन लॉन्ग इयर्स वी ऑल हैव एक्सपीरियंस सत्यम केस. सत्य एफडी वेरीफाई नहीं कर दिया तो क्या हो गया था? द ऑडिटर्स वर PwC and the company was Satyam. See how important was to verify the FD. These are the old cases. That doesn't mean that we have learned. Nobody has learned from that activity. Still, we feel that verification of stock, verification of balances is still a very, you know, low level activity. हम नहीं करेंगे यार, ये सब किसी और के लिए important है, हमारे लिए important नहीं है. But I would feel this is a base. As a promoter, you please ensure that these things are being done by your accountant, और या आपके खुद के नजर से एक बार देखिए. आई एम नॉट सीइंग द अकाउंटेंट विल डू नेग्लिजेंटली, या आपका अकाउंटेंट कामचोर है या उसको अक्कल नहीं है. अगर हमने उसको नहीं देखा है एज अ प्रोमोटर तो हम लेजी हैं. प्लीज नॉट पुट, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज माय स्टेक एंड व्हाट इज द अदर पार्टी स्टेक इनटू दिस एक्टिविटी. जिसका स्टेक ज्यादा है उसका जिम्मेदारी ज्यादा बनता है चेक करने के लिए. So my accountant is, yes, primarily responsible to ensure this reconciliation, this confirmation is brought. But एक practical दिक्कत आएगी, which I am sure the accountants will agree to me, that these people go and ask for balance confirmation का एक process अगर हम quickly go through करें, you go and you ask to your creditors and debtors to submit their ledgers. And accountants commonly face the problem that the debtors and creditors, they don't submit it on time. यहाँ पे मैं अकाउंटेंट्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपका रोल है ना बहुत वाइडर है. प्लीज इंश्योर योर रोल इज नॉट ओनली लिमिटेड कि आई एम अ वेरी गुड अकाउंटेंट, आई नो ऑल द डेबिट एंड क्रेडिट्स, आई नो ऑल द शॉर्टकट्स ऑफ टैलीज, आई नो जोहो, आई नो गुडो, आई नो XYZ, आई नो SAP. नो, यू ऑल्सो नीड टू एड अपॉन अ स्किल ऑफ गुड कम्युनिकेशन एंड अ वेरी गुड कोऑर्डिनेटर. वो पहिले जमाने असे नाही रे की साहेबांना पाठवून दिला, साहेबांना गरज असेल तर मागवतील लेजर, नाहीतर ऑडिटच्या वेळेस अभय सर सॉल्व्ह करून घेतील, असं नसतं. थोडी तुमची स्किल यूज करा, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ, फोर्स द क्लाइंट टू सबमिट. नाउ टिल दैट अगर उन्होंने फिर भी डेटा आपको नहीं दिया है, प्लीज एस्केलेट इट टू योर बॉसेस. एंड एज बिजनेस ओनर्स एंड प्रोमोटर, आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज हेल्प ऑल योर अकाउंटेंट्स टू गेट दिस डेटा टाइमली. तो पहला स्टेप आ जाता है कि अकाउंटेंट को डेटा का एक्सेस होना चाहिए फ्रॉम द थर्ड पार्टी. सेकेंड प्रोसेस चालू हो जाता है कि व्हेन द अकाउंटेंट रिसीव दिस, व्हाट एरर्स अकाउंटेंट्स डू. अकाउंटेंट्स है ना वो मैचिंग कॉन्सेप्ट में चले जाते हैं. हम कोई
ब्लाउज पीस सेंटर में काम नहीं कर रहे हैं कि उसका क्लोजिंग बैलेंस और मेरा क्लोजिंग मैच कर दो. दैट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव डन. I'll tell you one very practical example which has happened. There was a supply creditors ledger which we have asked, and my accountant, what that person has did, he found or she found a particular invoice as sales invoice in the supplier's ledger, which was not booked into my books as purchase ledger. What the accountant should have supposed to be done? That person has simply to match the account, उसने books में purchase का entry मार दिया. I don't think so it is correct at all. If there is a purchase entry missing, first you ensure that आपके पास वो purchase invoice है, क्या आपने वो सर्विस ली है, क्या आपने वो गुड सच में रिसीव किया है. ऐसा नहीं हो सकता कि सामने वाला गलत हो कभी. वी आर सो नाइव, हम लोग इतने भोले और सीधे बच्चे हैं अकाउंटेंट कि हमारी तो गलती होती ही नहीं है. सॉरी, हमारी गलती होती है, सामने वाले तो हमेशा करेक्ट होता है. इट डजंट गो वेल. बैंक रिको में भी कई बार हमारे पास डेबिट्स मार देते हैं, क्रेडिट मार देते हैं, हम लोग ब्लाइंडली उठा के बैंक चार्जेस में डाल देते हैं. हैव यू एज एन अकाउंटेंट हैव यू इवन इंक्वायर्ड इनटू इट? इज इट एन वैलिड चार्ज? These are the activities also an accountant are supposed to do. If there is such kind of a transaction कि एक transaction सामने वाले के ledger में मेरे में नहीं है, get into the depth of it, why it is not there, ask for the relevant documentation, acknowledge purchase invoice. जैसे मैंने माल रिसीव किया तो उसका मेरा acknowledgement कंपनी का है क्या, वो कॉपी सामने वाले से मांगो. क्रॉस चेक विथ योर स्टॉक रिकॉर्ड्स, क्योंकि हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं राइट, कि क्या मुझे उस दिन में एक्सेस स्टॉक आया था, क्या मैंने अकाउंटिंग नहीं किया. एंड देन यू पास द एंट्री. उसको हम बोलते हैं कि बैलेंस कंफर्मेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप इज रिकंसिलिएशन. प्लीज रिकंसाइल, डोंट मैच. यू शुड एप्लीकेशन ऑफ माइंड करो, मैचिंग मत करो. यू शुड रिकंसाइल. नाउ आई होप यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय रिकंसाइल, राइट. आगे और एक स्लाइड आएगा वेयर वी विल स्पीक एट स्ट्रेच अबाउट व्हाट यू मीन बाय रिकंसिलिएशन. द थर्ड पॉइंट एज स्टैट्यूटरी मोहित जी ने बताया कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है. वी ऑल नो now, a couple of years before, income tax has become very stringent about the creditors non-payment to MSME. हमें ये internally we need to ensure that जितने भी मेरे suppliers हैं, मेरे creditors हैं, वो MSME है कि नहीं है, ये activity आपको run करनी पड़ेगी. Every creditor, every supplier you have, please mark an email. उसका एक process है. MSME कैसा है नहीं है, you need to see that this process is followed. For detailed understanding of this process, I will not take much of a time today. You please get back in touch with Akshay or Vivek or myself individually, wherever you want to ensure that हम इसको कैसे कर सकते हैं. MSME को कैसे हम segregate कर सकते हैं, हम इनको कैसे note कर सकते हैं, and why it is necessary. In income tax, in your 3CD, in your tax audit, marking of an MSME payments outstanding or a prescribed limit will disallow expenses for that year. Please ensure that it is very necessary. I hope this is clear. Any specific question on balance confirmation from the team? Okay, I'll proceed. Akshay, the next slide, please. ये तो GST has become, I think so, we all are aware, GST has now become the epicenter of our entire solar system of business. Every activity, every transaction, every financial movement, we have to first take a litmus paper. पहला चीज चालू होता है to check whether this transaction attracts GST. Now, if the transaction attracts GST, how it has to be affected? What is the rate of GST? Under which head? Under which SSC code? Under which HSM code ये आता है? कोड को rightly define करना, rightly supply को define करना, rightly place of business को define करना. There are very important 2 or 3 concepts of GST which an accountant should be aware. One is place of supply. Second is time of supply. And third is it attracted, is that GST exempted, eligible, non-eligible? What is the rate of GST you need to apply? Considering all this, उसके बाद ही आप purchase और sale book किया जाता है. As an accountant, we very simply pick up and purchase invoice, उसमें GST लिखा है, हम GST credit को credit कर देते हैं. But please spend some time. Every new or fresh purchase or sale has to be analyzed and to be understood कि क्या हम इसका set off लेने के लिए eligible है. अब गवर्नमेंट का पेन पॉइंट हमेशा समझ लीजिए किधर आ रहा है GST में. You guys taking set off which is not eligible set off, क्योंकि उससे गवर्नमेंट का कलेक्शन कम होता है.
एज अ प्रोप्राइटर कई बार मेनी बिजनेस ओनर्स हुआ प्रोप्राइटर्स और जिनको नॉलेज लिमिटेड है, वी ट्राई टू टेक अप एनीथिंग एवरीथिंग आई परचेज कैन बी एलिजिबल फॉर सेट ऑफ. इट इज नॉट द केस. इट मे इन द लॉन्ग रन कैन बैकफायर टू अस कॉज जीएसटी इतने माइक्रो लेवल पे डेटा आपसे कलेक्ट करती है. उनको पता है कि आपने कौन से प्रोडक्ट का सेट ऑफ लिया है. आई थिंक सो अगर अभी कोई रिटर्न खुद आप जीएसटी आपके अकाउंट्स में से कोई फाइल कर रहा होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिटर्न्स आर बीइंग फाइल्ड एट आवर एंड. देयर इज कॉल्ड एज आईएमएस सिस्टम. सेट ऑफ लेने के लिए एक आईएमएस सिस्टम लास्ट कपल ऑफ मंथ्स अक्टूबर में शायद लॉन्च हुआ है. एंड वी आर नाउ टू एंश्योर दैट सेट ऑफ एलिजिबिलिटी should be strictly followed by using that IMS system. Every invoice set off का हर एक invoice के listing दिखती है हमें GST पोर्टल पे और हमें उसको accept, reject, pending ये करना होता है. Then only we proceed. उस क्लिक में अगर आपने कोई भी गलती करी है then you go for a toss. Now we say what is to be done as an year end sir. हमने year end में हमने सारे sales का टोटल मारना है, सप्लाई जो लायबिलिटी है, हमने GSTR1 में जितना मैच जो सबमिट किया है 1 and 3B सेल्स का टोटलिटी पे मैच करना है. उसमें कुछ भी अगर एरर्स है, रेक्टिफिकेशन है, इट इज पॉसिबल. वी शैल बी एबल टू डू इट विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर एंड एक्सटेंडेड 3 or 4 months. बट आई वुड रिक्वेस्ट व्हाई यू वांट टू वेट आफ्टर मार्च. डू दिस एक्टिविटी प्रायर. बैकएंड पे जीएसटी के बैकएंड पे जितना वी नो फ्यू ब्यूरोक्रेट्स पर्सनली, वी नो फ्यू people who are in the system. Your accuracy in GST, there are some traffic lights which the department is seeing for you. They actually see every assessee को red, amber, green ऐसे traffic lights दिखते हैं on certain of your activities. जैसे आप timely return file करते हो, आप बहुत ज्यादा rectifications नहीं मारते हो, आपके invoices बार बार cancel add changes नहीं आते हैं. जब भी आप ये ऐसा करते हो आप ग्रीन लाइट में जाते हो और प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टू यू एज अ स्क्रूटिनी और अ रेड इज ड्रास्टिकली लोअर. बट आप कॉन्स्टेंटली आपके इनवॉइसेस अमेंड कर रहे हो, आपके सेट ऑफ आप ब्लाइंडली ले रहे हो, आप कार का भी सेट ऑफ ले रहे हो, आप हेल्थ इंश्योरेंस का भी सेट ऑफ ले रहे हो. वी फील के गवर्नमेंट को लुटाने के लिए नहीं बैठे, बट वी ब्लाइंडली टेक इट. इट इज बीन व्यूड बाय द डिपार्टमेंट एंड देयर इज पॉसिबिलिटी टू गेट लव लेटर्स फ्रॉम देम. एंड आई प्लीज guys, take it from me, income tax love letters are still pleasant. GST love letters are painful. I will not get in detail for it. Only I would request as a March end activity, जो भी हमारे set offs है, जो भी हमारा liability है, you ensure those matches with your ledger. क्योंकि GST पोर्टल का वर्किंग अलग है, हमारा अकाउंट्स का वर्किंग अलग है. हमें लगता है हमने तो पोर्टल में करेक्ट कर दिया है. अभी अभय मणियार के ऑफिस पे हम चले जाएंगे और अभय सर उसकी जो टीम बैठी है वो एक मंथ का देख के उसको रेक्टिफाई करके एंट्री तो मार ही देगी सेट ऑफ की. हम कब आते हैं अभय सर के पास? हम आते हैं सितंबर के 28 तारीख को. दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस इज. या फिर हम आते हैं अप्रैल महीने में और उसके बाद हम उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं देते. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज एंश्योर दैट यू डू दिस थिंग्स राइट एट योर एंड फर्स्ट एंड मेक AMA और द अभय मणियार टीम एज अ चैलेंज टू फाइंड आउट क्वेरीज. मैं बताता हूँ, what happens, we feel very our ego satisfied. मैं हमेशा मेरे younger junior team को ही बता दे रहा हूँ. The more errors you come with us, we make ourselves feel very satisfied कि ये accountant को इतना भी नहीं आता है. For we feel it is our low hanging fruits है हमारे लिए. यार देखो हमने हमारा ego satisfy कर लिया. And there are certain accountants who really want to be, who are very brilliant and they really want to act upon as very dominant accountant. If you want to be a dominant accountant, make things difficult for a chartered accountant to find queries. Make it difficult for accountant to find queries. Don't feel it is an achievement कि हमने accountant को blank bank statement दे दिया है और फिर उसमें वो remarks डाल के हमको दे रहा है तो हमने उसको काम पे लगा दिया. You are underutilizing your chartered accountant. Up put in all the details. You fill in all the details. You send it to the accountant. And then the accountant will go to the next step to say how better what level he can improvise in your accounts and finalization. ये तो accountant के पास क्या था, उसने एक फिक्स टाइम डिसाइडेड रहता है हर एक एक्टिविटी के लिए. मैं इसका 3 घंटे 10 घंटे दूंगा. उस आवर्स में उसको जितना ठीक करना है आपके रिकॉर्ड को ठीक कर देता है बंदा. लेकिन अगर आपने उनके लिए बहुत लो हैंगिंग फ्रूट्स रखे हैं तो उसका सारा टाइम उसी में चला गया. Then he will switch over to another file.
एंड दैट जो हायर एंड का जो क्वालिटी इनपुट आपको चाहिए आपको उस सीए से नहीं मिलेगा. प्लस even the AMA team, my team is also human, they may do errors. आपके पास भी समय नहीं रहेगा. आप जब लास्ट मीट पे आओगे तो एरर्स को आप रेक्टिफाई करवा सको जो हमने करेक्ट किए हैं, या फिर हमारे हाथ से कुछ छूट गए. Then where we land up into frustration, which is of no good to you, no good to me, but really good to the department. So दोघांचं भांडण तिसऱ्याचा लाभ आपल्याला करायचा नाहीये. So that is why I remember, if you recollect that initially when Akshay said about the communication, whatever clarity and precision in your communication to the objective oriented अगर हम communication करते हैं आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ या आपके सर्विस प्रोवाइडर के साथ, आपको उस तरीके से प्रॉपर आउटपुट ही मिलेगा. प्लीज एंश्योर दैट योर कम्युनिकेशन, नाउ कम्युनिकेशन इज इन वेरियस फॉर्म, वर्बल, इन योर स्टेटमेंट्स, इन योर रिकॉर्ड्स. आप जितना क्लैरिटी के साथ और जितना प्रिसिशन के साथ बात करोगे प्रोफेशनल के साथ, आपको एग्जैक्टली उतना ही रिप्लाई मिलेगा. बट इफ यू आर गोइंग टू बी वेरी वेग, वेरी ब्रॉड, टू जनरल, taking up too many points to the professional, he himself will be giving you that kind of an output only. So to our benefit, ensure GST activity is a very precision oriented activity. Every invoice to invoice तो हमें accounting ठीक से करना है. Ensure that every month you do this. Treat your GST ledgers as a every month balance sheet बन रही है. आपके पोर्टल का जो outstanding है और आपके accounts, books of accounts, be it tally or any ledger, वो दोनों हमेशा मैच होने चाहिए. प्लीज कंसिडर दिस, एंड एज ऑफ मार्च इट हैज टू बी डन. Over to the next slide, Akshay. Now, as we said about the debtors and the creditors, I would like to now say a general review. हम हमारी बैलेंस शीट का जनरल रिव्यू करें. Reconciliation and accounts hygiene. This comes to the point where Mohit ji was very keen to say कि sir मुझे हमारे बुक से अभी मेहमान आ रहे हैं और उनको सारा क्लीन अप रखना है. Stocks, rest of the ledgers like your advances, your expenses. More importantly, जो हमारे पिछले साल के provisions हैं, my previous year balances which I have provided, which I have said as in salary payable, मुझे pay करना था. The corrected entries are not being passed. We say, okay, XYZ 2 lakhs rupees salary is supposed to be payable for 5-7 employees. करंट ईयर में हमने उनको मार्च की सैलरी अप्रैल में दी, बट वो अपने अकाउंटेंट ने, जूनियर ने, बंदे ने एक्सपेंस में डाल दिया. तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेबल तो अभी भी चल ही रहा है और हमारे यहाँ पे एक्सपेंसेस भी बढ़ गए. जैसे हमने बताया, हमने एक्यूरेट नहीं करे, हमको लगे सर प्रॉफिट बहुत लो है, प्रॉफिट बहुत लो है. पता चला ये 2 लाख का एंट्री चलने से मेरा 2 लाख से प्रॉफिट सडनली शूट अप हो गया. सो हम कुछ प्लानिंग ही नहीं कर पाएंगे जब तक आपके अकाउंट्स एक्यूरेट नहीं रहेंगे. So which are the common examples which we need to see at the March end list? जितने भी हमारे provision related, GST payable related, statutory payments related जो March opening balances है, वो compulsorily immediately अप्रैल में पे हो ही जाता है. आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, आपके मोबाइल बिल्स हो, कौन आपको 1 महीने से ज्यादा क्रेडिट देने वाला है? हम उसको करेक्शन कब करते हैं? 1.5 साल के बाद, जब वो सितंबर में आते हैं, जुलाई में आते हैं, which is so ridiculous. हमको अकाउंटेंट को देखे, the moment I see any such kind of balance sheet, where my opening balance has not been adjusted, see as a chartered accountant every time we may not be make a comment, but I'll tell you दिल की बात है. हम जैसे देखते हैं मैं समझ जाता हूँ ये बंदा 1.5 साल तक सोया रहा इसमें, तो 1.5 साल का पगार कैसे लिया? वो प्रमोटर को अगर खुद का क्रेडिटर्स रिवर्स नहीं, प्रोविजंस रिवर्स नहीं कर सकता, ये बंदा कलेक्शन कब करता होगा? दिस इज एन assumption which anybody who views your accounts which is very lethargy, जहाँ पे हमने ओपनिंग बैलेंसेस अभी तक करेक्शन नहीं की है, तो पूरा 1.5 साल तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे सोया रहा. He is not even respecting his books of accounts. Why the books of accounts will respect us? Please ensure that we see the books of accounts regularly. हमारे opening balances जो March, because now we are into what? 24-25. So March 24 के जो भी opening balances होंगे, provisions के, expenses का provision हो, salary का provisions हो, वो हम ये साल में reverse करके ही finalization के लिए लेके आए. So provisions has to be reversed. Any kind of loans, हम inter party normally the business needs are there, we may take up any private loans or we would have lended somebody privately, maybe within the family loans होते हैं. You ensure that those things are reconciled. You ensure that cross company balances, कई बार हमारे we have 2-3 companies internally, हमारे पास ही सब accounts हैं. Mr. A, Mr. B, Mr. C, they are all sister concerns. But what we do, we even lethargy कि हम इसका डेबिट उसके क्रेडिट बैलेंस के साथ मैच हो रहा है कि we try to miss out on that. I would request all of you
प्लीज इंटरनली आप पहले वो चेक कर लो. You ensure that all your cross company balances are accurately matched. Any deviations, any reconciliation needed has to be acted upon wisely, not only with data status but other advances also. And a very loving bucket that we have created is suspense. हम बोलले थे अभय सर एक काम करा, तुम्ही सर अकाउंटिंग करा, सस्पेन्स आम्ही नंतर बसून सॉल्व्ह करू. नंतर कधी बसणार सस्पेन्सला? जे पहिल्या दिवसापासून तुम्हाला सस्पेन्स माहिती आहे, आम्हाला कुठं माहित पडणार आहे? हम लोग कुछ अंतर्यामी है. ओके, आई नो यू हैव वेरी हाई रिगार्ड्स एंड वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ईएमए, बट एक कुछ लिमिटेशंस हमारे भी है. हम अंतर्यामी है नहीं कि मुझे सपना नहीं पड़ेगा. सो यू नीड टू हैव मोर क्लैरिटी. एज वी से मोर क्लैरिटी यू गिव अबाउट द ट्रांजैक्शन एंड डिटेल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैन एज एन अकाउंटेंट कैन डू द रेक्टिफिकेशन. तो सस्पेंस अकाउंट्स को आप आपके एंड पे क्लियर करो. डोंट ब्रिंग दैट अकाउंट्स टू अस और एट द प्रोफेशनल वेयर यू से सर ये कोई सस्पेंस है, हम लोग बाद में उसको फाइनलाइज करेंगे. हम कैसे फाइनलाइज करेंगे? बैलेंस शीट बनने का समय आ चुका है, हम मार्च में आ चुके हैं. हमें ये जो जाले जमले जो पड़े हुए ना, पंखे साफ करते हैं ना दिवाळी में, तो ये सस्पेन्सेस दोष ते सगळे जाळे आहेत आपल्या घरी लागलेले. ते जाळे आधी काढा, नंतर मग तुमची दिवाळी चालू होणार. सो दॅट इज हाऊ आय से लेट्स मेक दिस एज अ फेस्टिव्ह सीजन. लेट्स मेक अवर अकाउंट्स बेटर हाइजीन, एंश्योर ऑल अवर लेजर्स आर क्लीन अप, क्रॉस कंपनी बैलेंसेस आर चेक, पुराने कैरी फॉरवर्ड अगर कुछ है, गिव अ लुक टू इट एंड ट्राई टू रिजॉल्व देम. वेरी बेसिक, वी नो विच इज नोन टू अस, बट हम क्या हो गया, टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई. वी आर लर्निंग न्यू बिजनेसेस, हमारा बिजनेस भी बहुत ग्रो हो गया. हम लोग एक से बदले 4 बिजनेसेस कर रहे हैं, 2 एम्प्लॉइज के बदले 200 एम्प्लॉय लगा रहे हैं. ऑल स्ट्रेटेजीज आर राइट, ऑल ग्रोथ प्लान्स आर परफेक्ट. प्लीज डोंट मिस ऑन दीज रूट्स ऑफ अकाउंटिंग, verification activities in your companies, and basic prominent viewing of your own accounts on a regular basis. Next slide, Akshay. इसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगा पॉइंट जस्ट सबके लिए. Yes. अभी इसके लिए देखिए, एक VCFO सर्विस जो इनका वर्टिकल है, उसका क्या रोल हो जाता है कि मंथली ये सब चीज को आप लोग लास्ट ईयर में हम लोग ईयर एंड पे बैठेंगे, 100 चीज एक दिन में क्लियर नहीं हो सकती है. दैट्स व्हाई VCFO पोजीशन इज देयर कि वो जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको हम लोग कम कर सकते हैं. दैट्स व्हाई इनकी जो टीम नया वर्टिकल क्रिएट किया हुआ है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट ये भी है कि जो हम लोग बजट एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्लस बजट के सामने जो एक्चुअल वर्किंग कर रहे हैं विद क्लीनिंग ऑफ बुक्स, ये लोग मेक श्योर करते हैं एज ए MIS पार्ट. Yes. Right, sir? Yes, Mohit. Yes. Thank you for adding this up. Yes. Because what is happening, as I said, this virtual CFO services, आपने जैसे rightly कहा, the CFO services is a little advancement and with an involvement of intelligence. Accounting service अगर layman promoters को समझ में आना चाहिए, तो it is a more advancement of data of your own accounts to be presented to the promoter, जहाँ पे उस चीजों को आप अच्छी पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं. I will come back on that. Just next slide, Akshay, please. I think so. I will not go quick. I will not go through this. Most of these people are aware about it. End of the day, March end है. हर इंडिविजुअल को अपना अपना टैक्स प्लानिंग सेविंग करना है. I totally understand. न्यू रेजिम आ गया है सर, इसका कोई अभी मायने नहीं रहा. Depends. Don't miss upon making savings. Don't let tax incentives initiate you to save. सेविंग अपने खुद के लिए है, बट अगर हमें बेनिफिट होता है बिकॉज यू स्टिल हैव एन ऑप्शन टू गो ऑन अ ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम. यू हैव वंडरफुल सॉफ्टवेयर्स, हम सारा डेटा अंदर डालते हैं एंड जस्ट 1 click वी सी व्हाट इज द बेस्ट टैक्स सेविंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू एंड वी फाइल इट अकॉर्डिंगली. बट विदाउट मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट, विदाउट शेयरिंग द डेटा ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स, वी मे नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज दैट न्यू और ओल्ड रेजिम का ऑप्शन. वो अब तक आता भी नहीं है सर. कई बार आई विल रिक्वेस्ट टू टेल यू ऑल that there are a lot of activities in the back end that is been done in the favor and the benefit of the accounts and the taxing. The things which surface out to you is after lot of manthan, एक या 2-4 चीजें छूट जाती है which comes out to you, and then we face to face we sit across and we resolve. But there are a lot of things which has been happening. So tax planning, quickly running through, ATC 1,50,000, ATCCD pension, ATD, all these things you ensure you do it before 31st March. Okay, so the next slide, Akshay. As time to time I have been saying, what happens, हम अगर ये सब चीजें मैच नहीं करते हैं, we are inviting our departmental queries. But I think so
the life has moved. Now we all have become over the period very matured businessmen. ये इतना जरूरी नहीं कि हमें स्टैट्यूटरी डंडा आने पे ही हम इम्प्रूव करते हैं. हमें हमारा बिजनेस का कलेक्शन रिपोर्ट समझ में आना चाहिए, हमें हमारे जीपी रेशियो समझ में आने चाहिए. वी शुड ट्रीट अवर बिजनेस फिनेंशियल्स नॉट लेस देन अवर कुंडली. मी नेहमी म्हणायचो आपला मुलगा पण कोई भी बच्चा घर में पैदा होता है, हम पहले जाके उसका कुंडली बनाते हैं. पीपल हु बिलीव इनटू दैट. बट व्हेन वी से अवर बैलेंस शीट, हम उसको उस पर्सपेक्टिव से कभी बनाते ही नहीं है. आई ट्राई टू टेल पीपल योर बैलेंस शीट्स इज नथिंग बट द कुंडली ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर. Try to ensure that it is accurate. Plus give your a better view, a good perspective to the financial records. अपने गलत रिकॉर्ड्स, अपने गलत इन्वेंट्री वैल्यूएशन डाल दिया, हमने इन्फ्लेटेड डेटास रख दिए, हमने डिफ्लेटेड डेटास रख दिए, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हमारे बिजनेस में कितना वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है. Either we are over leveraged our business or we are underutilizing our business. Somewhere with just assumption we keep running and doing lot of business, doing cash flow, we come with our own assumption. Frankly speaking, we should nowadays and everywhere we have learned what is actually impacting and what is really coming out as an impactful action is the action taken on base of data and not the action taken on the base of assumption. मेरे बिजनेस का डेटा मुझे कहां से आएगा? मेरे टैली रिकॉर्ड से ही आना चाहिए. अनलेस वी आर मेंटेनिंग समथिंग पैरेलल रिकॉर्ड. अगर हम कोई पैरेलल रिकॉर्ड बना रखा है, ऐसे कोई बिजनेस में अगर हम हैं तो एटलीस्ट वो पैरेलल रिकॉर्ड तो भी एक्यूरेट है. बट दिस फोरम इज ओनली मेंट फॉर योर फाइनल अकाउंट्स व्हिच इज इन टैली और जोहो व्हिच वी सबमिट टू द डिपार्टमेंट. हमने हमारा रिकॉर्ड्स, हमने हमारे अगर फाइनेंशियल रिकॉर्ड एक्यूरेट नहीं, व्हाट डिसीजन वी आर गोइंग टू टेक? वी गो टू बेड दैट टाइम, हम लोग कुछ तो बैठे हैं शाम के टाइम पे, मूड में आया, हमारे दिमाग में कुछ फाइनेंशियल डेटा देखा एंड वी आर मेकिंग आवर ओन डिसीजंस. व्हाई यू वांट टू बी दैट? मेक योर रिकॉर्ड्स एक्यूरेट, डू योर स्टॉक वैल्यूएशंस एक्यूरेट, बी योर डेटास एक्यूरेट, बी योर क्रेडिटर्स एक्यूरेट एवरी वीकली, डेली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, एंड देन यू डू दैट डिसीजंस. जैसे हमने अभी मोहित जी ने बताया कि वर्चुअल सीएफओ सर्विसेज, आई विल टेल यू व्हाट इज इट. When you see data, financial data, we would have all, a lot of people are spiritual over here. We all have been very spiritual, very God fearing. We read lot of scriptures, old scriptures. हम common एक word अगर ले ले, हम बहुत सब लोग भगवत गीता भी पढ़ते हैं. And it has been commonly known and said. You read the same Bhagavad Gita now and again. Your situations changes, your thought process have they matured time to time. The same sentence you will interpret in different fashion. Don't we all believe into this? Thus, your own financial accounts, I'm telling you, please have high respect to them. They are not less than your Bhagavad Gita. अब आपके बैलेंस शीट को बार बार पढ़ो. I'm telling you, I'll bet on it. आप आपके खुद के रिकॉर्ड से अलग अलग डिसीजन लेने की कैपेसिटी बनाओगे. But somehow most of the businessmen, we feel that growing business is meeting clients, raising invoices, making big deals, making investments. Beyond doing this, give some good quality time to your balance sheet. I respect and I'm very happy that you all have very high trust on EMA, ensuring that sir आप देख रहे हो ना, तो हम नहीं जरूरत हमको देखने की. But boss, एक्शन तो आपको लेना है ना आपके डेटा पे, हमको तो नहीं लेना है. We are just going to be like a postmortem. हमको सिर्फ रिपोर्ट बता देनी है, भाई डेबिट है, बैंक बैलेंस है, डेबिट चला गया बैंक में, पैसा जमा हो गया. We are not the one who are going to take a decision. I am asking you guys to go through the data for you to take right decisions, to have a right growth. Where you want an additional facility, as we have earlier spoken, again repeating, virtual CFO services, you can claim for it. There would be a different services which will be extended to you guys. Data, since there are a lot of data which is now in the market, हमारे transactions बहुत बढ़ गए पिछले 20 साल से. We have been seeing the earlier size of transactions and now the transactions have moved on drastically. So infuse some kind of an technology, some kind of an data automation, which will help you to extract the data more and more better way. Start making investment into technology. Start making investment into good data analytical tools. And give quality time to your data is my request. To ensure your cash flows are maintained, your inventories are in the place, your GST, TDS compliances are met well.
Beyond that, if anything still comes up, it is a fate. But at least we don't have to blame ourselves कि यार हमारा कहीं पे तो हमारा negligent हो गया, कहीं पे तो हमने छोड़ दिया. That will not happen. You can get back. You can get back to AMA team and say, अरे guys ये थोड़ा changes करवा दो, यहाँ पे कुछ छूट गया या गलत हो गया, या we need to rectify it. Thus, consequences you are aware. This entire presentation will also be shared to you guys, along with the checklist of broader to-dos activities. So don't worry. I would request you to please ensure that you follow all these activities, and any help needed, any extension of support needed from EMA, we are always available to you guys. Any question and answer specific to it, we will take up now. These are another 5 minutes we do have. Either you can write it in the chat box to reduce the confusion, or you can open up your mic and or raise the hand, so then we can allow one by one. Akshay, the next slide. I think this is the last slide. Akshay, can you get to the next slide, please? Yes. So now it's an open forum. We have another 5 minutes to take upon. So mine nothing, sir. मेरे जो भी points थे I expressed and it was very good, sir. Very good. Actually ऐसे interactions required है on and off. So एक टीम से मिलने का मौका मिलता है, exchange views होता है and new thoughts take up होता है, sir. It's a good initiative, sir. Thank you so much, sir. Yes. Thank you, Mohit. Ketan, guys, specific विचारायचे तुम्हाला? जीत, anything from you? Sanjay sir, anything from you? Thanks, Abhay. Thanks for the session here. It was really enlightening. So a lot of HNI data, we always see, जैसे investments की data भी हम expect करते हैं कि कई बार वो हम लोगों को अगर monthly, timely basis पे अगर आपसे regular जैसे आता है, few of the really clients, I would really like to praise few of my clients out here, Mohit ji, Jeet. These clients, we praise them. They have been so particular and so regularized in they अगर उनसे monthly data मांगते तो fix 5th of every month the data is there in my inbox. So we really happy that most of my clients are quite disciplined, and they help me to maintain my team also to be disciplined. So thanks, Jeet, for your support. Continuously be with us from almost long years. Ketan, anything you want to share? काय तुम्हाला बोलायचं आहे? नाही सर, हे पॉइंट्स सगळे क्लिअर झालेले आहेत ते मला. ओके. काही अडचणी असं तुम्हाला काय वाटतं का? कुठेतरी असं तुम्हाला कन्फ्युजन किंवा? नाही सर. ओके. काय असेल तर प्लीज बी इन टच. तुझं तर डायरेक्टली अक्षयशी बोलणं होतच असतं. हो चालूच आहे ते. संजय सर एंड टीम, एनीवन, एनीथिंग फ्रॉम यू? पालवे सर? I hope we are quite near to the closure. Thank you all for the patient listening, and I would be sharing, as I said, the profile as well as this presentation also, and a checklist of points which we need to take care of. हे मुद्दामून खूप बेसिक्सलाच टच केलंय, कारण की जर तुम्ही आमची फर्स्ट स्लाइड बघितली असेल, अक्षय, if you can get to the first slide. So we end with the start. So my mission has been last. Sir, just one more. please. मुझे एक नया थॉट आया सर. सर इसको जैसा आपने सर ये इनिशिएटिव लिया है, वी शुड कंटिन्यू एटलीस्ट मंथली या क्वार्टरली. वी शुड टेक सम टॉपिक्स और उस पे हम लोग डीप डाइव करें, और एज अ आर्टिकल, एज अ टीम. This you will all agree that this is my first time we had just conducted. Special thanks to my entire team, Shalaka, who has understand structured this entire technology part. Akshay and Vivek has developed this entire process of PPT. Yes. But we will ensure that quarterly, as of now, we have decided to correct. It would be great. Taking up any specific changes, major changes coming up in the system. So as a team will work बहुत अच्छा रहेगा सर. वो एक होता है ना, एक it will value addition for everyone, sir. Sure. And frankly speaking, हमारा time save हो जाता है. Most of these things we keep repeating to every client. Very true. Every time. So which will help us. And in the open, in future, I will request everyone to have their own views and be very vocal to express and come with a lot of questions if they have. So as I said, this has been my mission and approach of the firm almost since
beginning of the we ensure keep things simplicity, work from the first principles, ensuring the value focus, and ultimately the outcome is our client delight. We are not Yes. we don't want to complex. We know already the business is very complex. If we also start speaking our complexities to you, we try to see at our firm जितना हम simplicity से और layman language में आपको आपके problems को समझ लें. बहुत सारे टाइम हम लोग रिप्लाई इमीडिएटली नहीं देते हैं बिकॉज वी अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज अवेलेबल देयर. हम सिंपल तरीके से सुनते हैं. बैकएंड में बहुत कुछ होते रहता है. व्हेन वी हियर टू योर इश्यूज, बहुत कुछ उसको स्ट्रीमलाइन कर देते हैं. एंड वी ट्राई टू फोकस ऑन द फर्स्ट प्रिंसिपल्स. काफी बेसिक चीजों पे फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी करो, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट करो, वहां से करो, आपके लेजर्स मैच करवा दो. रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल फॉल इन इट्स प्लेस. सो वी ट्राई टू डू दैट. एंड ऑब्वियसली व्हेन वी से we don't say ka ledgers match karo, hum hamesha bolte reconcile karo. So that kind of value we try to always add. That intelligence we always try to add from the first principles, ensuring you guys are happy. We ultimately outcome is we as your professionals and your professional partners, business partners, we always try to call ourselves, ensure that we are also leading up to and along with your client delight.